Hello students, today we are going to start clauses. What are clauses? Clauses क्या होते हैं? A clause is a group of words that includes a subject and a verb. Clause को हम ऐसा भी कह सकते हैं एक सिंपल सेंटेंस जो शब्दों का समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लॉज मतलब उपवाक्य, एक सिंपल सेंटेंस, एक पूरे सेंटेंस का छोटा पार्ट जो अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस होता है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो सब्जेक्ट और वर्ब को अपने आप में रखता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। यहाँ पर हम ये देखेंगे दो तरह की क्लॉजेस होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। आप ऐसा देखिए, आपने शुरू में सेंटेंसेस पढ़े, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस इज ए सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड ए ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। बहुत ही साधारण वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है। अब आप देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहते हैं जो दो सिंपल सेंटेंसेस से मिलकर बने होते हैं और उनको जोड़ने के लिए किसी कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। मतलब दो इक्विवेलेंट रैंक के, दो बराबर एक जैसा अर्थ बताने वाले सब्जेक्ट जो एक जैसे दो सेंटेंसेस जिनको जोड़कर एक सेंटेंस बनाया जाता है, वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम कंजक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज ए सेंटेंस which is made up of one, two or more than two simple sentences, जो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर बनाए जाते हैं और उनको एक साथ लिखा जाता है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसमें दो टाइप की क्लॉजेस में हम उसको डिवाइड करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम दो क्लॉजेस में डिवाइड करते हैं, एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है वह क्लॉज जो अपने मीनिंग के लिए, अपने अर्थ के लिए दूसरे किसी सेंटेंस पे डिपेंड नहीं होती, वाक्य के किसी दूसरे हिस्से पर डिपेंड नहीं होती है। दैट इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वह हिस्सा जो अपने आप में पूरा अर्थ नहीं बता पाता, जो अपने आप में पूरी बात नहीं कह पाता, उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। वह उपवाक्य जो अपने पूरे अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है मतलब निर्भर होता है, जो उसका पूरा अर्थ हमें प्रिंसिपल क्लॉज से मिलता है। ऐसे सेंटेंस के वाक्य को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबसे बड़ी बात ये होती है कि वह जो है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और बचे हुए पोर्शन को हम दो या दो से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरे होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। सेंटेंस के वह भाग, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो भाग हम मान सकते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट यानी प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है या डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है, वो अपने मीनिंग के लिए
प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड होती है, उसका पूरा अर्थ हम तभी समझ पाते हैं, हमारे दिमाग में तभी क्लियर होती है वो पिक्चर, जब हम उसको प्रिंसिपल क्लॉज के साथ बोलते हैं। और प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज होती है जो अपने आप में पूर्ण होती है, उसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज से कोई मतलब नहीं होता। इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। An independent clause can express a complete thought. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है उसका अपना पूरा एक विचार होता है, अपनी भावाभिव्यक्ति होती है जो अपने आप में पूर्ण होती है। एग्जाम्पल देखिए आप, तारा एट अ चीज रोल आफ्टर शी वॉच्ड द न्यूज। तारा ने अपना पूरा चीज रोल टीवी पर न्यूज देखने के बाद खाया। Even though his mother is a driving instructor, my cousin failed his driving test. A computer once beat me at chess but was no match for me at kickboxing. आप देखिए तीनों सेंटेंसेस जो एग्जाम्पल्स के सेंटेंस हैं, इनमें ये बात हम महसूस कर रहे हैं, ये बात हमें समझ में आ रही है कि ये अपने पूरे विचार को आपके सामने बता पाने में सक्षम हैं, इन्हें किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। अब देखिए डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज। Subordinate clause, a dependent clause is usually a supporting part of a sentence and it cannot stand by itself as a meaningful preposition. A dependent clause generally sentence का सहायक रूप होती है, लेकिन अगर हम इसको अलग से पूरे सेंटेंस के अलावा बोलें तो ये अपने आप में पूर्ण रूप से अपना मीनिंग नहीं बता पाने में सक्षम होती है। ऐसी क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है, जो वाक्य से अलग बोलने पर अपनी पूरी बात बताने में सक्षम नहीं होती है। अब एग्जाम्पल देखिए, जो तारा एट द चीज रोल, हम इस पूरे सेंटेंस में इस पार्ट को अलग करेंगे। तारा एट अ चीज रोल, तारा ने चीज रोल खाया, ये अपने आप में पूरी बात है। हम अगर पीछे का बचा हुआ वाक्य नहीं बोलेंगे तब भी हमको ये बात समझ में आएगी कि यह प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन इसके बिना अगर हम पीछे के पोर्शन को बोले सेंटेंस के, आफ्टर शी वॉच्ड द न्यूज, आफ्टर शी वॉच्ड द न्यूज, उसने टीवी पर न्यूज देखने के बाद क्या किया? क्या वाक्य से कुछ प्रूफ हो रहा है, कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये समझ में आता है हमें कि अगर हम आगे के पोर्शन के बिना इस पीछे के वाक्य को बोलेंगे तो ये अपने आप में पूरा सेंटेंस मीनिंग नहीं बता रहा है। ये क्लॉज, ये उपवाक्य सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज के बिना अधूरी लग रही है, इसका पूरा कुछ भी भाग समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जो चीज आपको अपने आप में पूरी बात न समझा पाए, बिना दूसरे वाक्य के हिस्से के साथ में लिए हुए, ऐसे भाग को हम क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। अब आप फिर से देखिए, माय कजिन फेल्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट, मेरे कजिन ने अपना ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं करा, फेल हो गया। तो ये अपने आप में पूरी बात है। Even though his mother was a driving instructor, हालांकि उसकी माँ जो है वो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है। तो हम अगर इतने से वाक्य को एक अलग तरह से बोलेंगे और पीछे के वाक्य को साथ में नहीं बोलेंगे तो आगे के वाक्य का पूरा अर्थ पता नहीं चल रहा है कि वो पूरी बात क्या कहना चाहते हैं। ऐसी चीज जो अपने आप में पूरा अर्थ ना दे पाए वो डिपेंडेंट क्लॉज है,
और बचा हुआ पोर्शन प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि वो अपने आप में पूरी बात कह रहा है। A computer once beat me at chess but was no match for me at kickboxing. ये कंप्यूटर ने एक बार मुझे चेस के गेम में पराजित कर दिया था, लेकिन मेरा बॉक्सिंग में कोई मुकाबला नहीं है। This shows that please note down these examples. The examples are very important. These examples are very important. What is an adjective clause? This is in your course. You have already learned about it, the adjective clauses. What is an adjective clause? An adjective clause is simply a group of words with a subject and a verb that provides a description. The clause starts with pronouns such as who, whom, that or which. अब देखिए आपकी वर्कबुक में लेसन नंबर 17 में पीछे ये एक्सरसाइज दी हुई है। आज आपका वर्कबुक का क्लास है। आई थिंक दैट यू ऑल ब्रिंग दिस वन। अब आप मुझे बताइए कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। एडजेक्टिव क्लॉज आपको क्या समझाई गई है? एडजेक्टिव क्लॉज इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ सब्जेक्ट and a verb that provides a description. The clause starts with a pronoun such as who, whom, that or which. Adjective clause साधारणतः शब्दों का वह समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और वो अपने आप में फुल डिस्क्रिप्शन बताता है। The clause starts with a pronoun और ये प्रोनाउन से शुरू होते हैं जैसे who, whom, that और which. एग्जाम्पल देखिए। My dog, who usually refuses to go near the water, dived in the canal to chase a fall. In this example, the clause acts like an adjective. मेरा डॉग जो कि पानी के पास जाने से डरता है, मना करता है, वो अचानक एक बॉल के कारण कैनल में कूद गया, डाइव कर लिया उसने। अब देखिए माय डॉग, मेरा डॉग जो है, हु, विच वन, जो पानी के पास जाना नहीं चाहता है। तो ये उस कुत्ते की स्पेशलिटी हो गई कि वो पानी के पास जाने से डरता है। The man who lives next door is getting better. The man who lives next door, वह व्यक्ति जो मेरा पड़ोसी है, lives next door, जो मेरा पड़ोसी है। ऐसी बात जो उस व्यक्ति की विशेषता बता रही है कि वह मेरा पड़ोसी है। ऐसे व्यक्ति की स्पेशलिटी, ऐसा व्यक्ति जो मेरा पड़ोस में रहता है। जब ये क्लॉज, ये उपवाक्य उसकी स्पेशलिटी बता रहा है, इट मीन्स इट शोज इट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव क्लॉज। अब देखिए, अब आपको ये बनाने के लिए एक्सरसाइज बुक में दिया हुआ है, अ कुकिंग गैस सिलेंडर कॉस्ट अ लॉट ऑफ डैमेज। अब आपको किसके साथ कंबाइन करना है? बचा हुआ सेंटेंस आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, इट एक्सप्लोडेड इन अवर किचन। A cooking gas cylinder caused a lot of damage. It exploded in our kitchen. अब आपको इसमें एडजेक्टिव क्लॉज के साथ यूज करना है। आप कैसे लिखेंगे? A cooking gas cylinder which exploded in our kitchen caused a lot of damage. अब अपनी वर्कबुक में इसके आंसर फटाफट लिखते जाइए। A cooking gas cylinder which exploded in our kitchen caused a lot of damage. Rabindranath Tagore won the Nobel Prize. He wrote Gitanjali.
Rabindranath Tagore won the Nobel Prize. He wrote Gitanjali. Rabindranath Tagore wrote Gitanjali, won the Nobel Prize. Answer है Rabindranath Tagore wrote Gitanjali, won the Nobel Prize. A cricketer has been banned for life. He took drugs. A cricketer who took drugs has been banned for life. A cricketer who took drugs has been banned for life. A little girl has been found safe and well. She has been missing since Tuesday. A little girl who has been missing since Tuesday has been found safe and well. A little girl who has been missing since Tuesday has been found safe and well. An old lady now wants to climb Mount Everest. She did a parachute jump. An old lady now wants to climb Mount Everest. She did a parachute jump. An old lady who did a parachute jump now wants to climb Mount Everest. A company has laid off thousands of workers. It owns a chain of petrol pumps. A company has laid off thousands of workers. It owns a chain of petrol pumps. आंसर देखिए, a company which owns a chain of petrol pumps has laid off thousands of workers. A company which owns a chain of petrol pumps has laid off thousands of workers. आपकी वर्कबुक में लेसन नंबर 17 के पीछे की एक्सरसाइज देखिए. Look into the book. Lesson number 17 from workbook. Add suitable suffix to the given words to make adjectives. आपको जो शब्द दिए गए हैं उसमें सफिक्स लगाइए और उनको एडजेक्टिव बनाइए. आप सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में जानते होंगे. सफिक्स का मतलब है पीछे लगाइए, पीछे लगने वाले पिछले, और प्रीफिक्स यानी शब्दों के आगे आपको ऐड कर नए शब्द बनाना है. रीजन, रीजनल. कम्युनिटी, कम्युनिटी ओरिएंटेड. नेशन, नेशनल. कॉस्ट, कॉस्टली. कॉस्ट यानी कीमत, कॉस्टली यानी कीमती. ऑपरेट, ऑपरेशनल. इंपोर्ट, इंपोर्टेड. import,
imported. देखिए, आपकी वर्कबुक में पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को आप पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे. What could serve remote rural settlement? What could serve remote rural settlement? Small hydroelectric power generators ranging from a kilowatts to several megawatts could serve rural settlements. Small hydroelectric power generators ranging from a kilowatts to several megawatts could serve rural settlement. What was installed at Darjeeling and when? Hydroelectric plant of 200 kilowatts was installed at Darjeeling in 1887. In 1887. How was the installation of a small hydropower station an important step for China? It was important because it generated approximately one-third of all the electricity consumed in rural areas. It was important because it generated approximately one-third of all the electricity consumed in rural areas. How much energy can be gained from 0.5 megawatt station? It can energize 100-watt bulbs in 5,000 households. It can energize 100-watt bulbs into 5,000 households. What do the small units require? The small units require smaller initial capital and the gestation period. The small units require smaller initial capital and the gestation period. What is the most important aspect of the smaller units? What is the most important aspect of the smaller units? They can be built, maintained, and operated by rural communities, and they need not have to be a part of national grid. They can be built, maintained, and operated by rural communities, and they need not have to be a part of national grid.
Do you think the smaller units can serve our purpose successfully and why? Yes, they can be operated by local communities without any national bureaucracy being involved. Yes, they can be operated by local communities without any national bureaucracy being involved. Name the station where India had installed small hydro units. Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, and Arunachal Pradesh. Justify the title of the passage Small is Sweet. The title is justified. The success story for small power projects in China is an example. Small units can be built, maintained, and operated by rural communities. They require a smaller capital and the gestation period. They can be operated by local communities without any national bureaucracy being involved. Thank you. Thank you, students.
Okay. That is a